नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज तक में। मैं हूं अनीता ब्रिटा और आज मेरे साथ है द टीम ऑफ यूटन। हेलो, वेलकम वेलकम। हेलो हेलो हेलो। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि आप रिमेंबर अलाया, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस फिल्म अर्लियर इन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज वी हैव स्पोकन। मैंने तो पिक्चर देख ली है, व्हेन इट रिलीज्ड आई हैड वॉच्ड इट, सो आई हैड एंजॉयड, लाइक आई एंजॉय थ्रिलर। यूटर्न देख ली आपने? जो ओरिजिनल है वो देख ली, 2000 दूसरी यूटर्न आपने नहीं दिखाई। आई हैव बीन वेटिंग। 5 है। There are 5 returns. 2018 में Samantha. So ours is an adaptation actually, not even a full remake. Yeah. It's Okay. a very different. Then it will be more interesting. You will, you will enjoy it. It's thoroughly. very different from. I'm sure it will be different from the original. Yeah. But I want to know, आप लोग ने पहले देखी थी? कोई भी आपने देखी जिसमें से 5 जो भी रिलीज हुई है उसमें से एक भी कोई देखा है? No, actually. So मैंने बेसिकली 5 वर्जन्स जो बंगाली में, फिलिपीन में आई थिंक और तमिल तेलुगु, मैंने सारे वर्जन देखे हुए थे स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद। एंड आफ्टर वॉचिंग दैट मैंने इनसे कहा था, जो भी एक्टर्स आ रहे थे, कि प्लीज ओरिजिनल पिक्चर मत देखना, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई आई वाज लाइक कि इट्स अ वेल सेलिब्रेटेड फिल्म एंड कहीं ना कहीं यू स्टार्ट टू गेट इंस्पायर्ड बाय इट, जो मुझे बिल्कुल नहीं करना था। सो या, बट आई हैव सीन ऑल द लैंग्वेजेस। तो इवन नाउ यू ऑल हैव नॉट वॉच्ड इट, अभी भी नहीं देखा आपने? No, I पूरा thought शूट होने के बाद मैंने सोचा कि अभी इतने टाइम के लिए नहीं देखा है तो ना अभी रिलीज के बाद ही देखूंगी। इस फिल्म को रिलीज होने के बाद। Lovely. But tell me personally, do you all enjoy thriller films? Do you all enjoy suspense I films love it. watching? That's my favorite genre. Thriller, horror thriller, psychological thrillers, जिसमें लगता है कि ये हो रहा है कि वो हो रहा है. Is this gonna happen or that's gonna happen? Which we are trying to deceive the people, like the audience, and through the characters, but it should be within the characters. Ki, matlab, what is Radhika Bakshi thinking? Is she thinking this? Are we? So we are totally with her. Then sometimes you're totally with a cop. Sometimes you're totally with somebody else. Sometimes you're totally maybe with a ghost or you whatever. You know. तो जितना आप उनको ट्रिक करते रहते हैं, I think audience loves that when their mind is also totally working with the story. And खत्म होने के बाद then discussions होते हैं कि wait उस scene में वो हुआ था, you know, वो अरे वो तो पहले से ही भूत था, ओ Sixth Sense में हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, you know, things like that. So I think mainly one of my favorite genres. What about you? मुझे थ्रिलर पसंद है, हॉरर बिल्कुल पसंद नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत डरती हूँ। आरिफ ने यू टोल्ड मी टू वॉच वन फिल्म before we started this. Don't Breathe, I think it was. And I hate very scary films. So I was like, अरे अभी research के लिए I'm going to have to watch all these other films and you know, तो मुझे horror films बिल्कुल पसंद नहीं है। In the moment मुझे मजा आता है, लेकिन बाद में मैं बहुत overthink करती हूँ. After a point, it's just going to be running in my head non-stop until for a very, very long time. So I don't watch horror, but I like thrillers. तो how did you manage to do ये फिल्म कैसे करने में आपको हुआ? तो actually when you're acting then you realize then it doesn't feel as scary क्योंकि आप if you're in a room alone you're not actually in a room alone. वहाँ cameraman है, spot दादाज है, sound दादाज है, आरिफ है, DOP है, so there's just in a room that looks alone there are actually 50 other people. Correct. So then you're okay, but when you see a film, obviously it seems like you're alone. So yeah, shooting it was fine. It was mentally exhausting. I was going to come to that. And physically exhausting more than that. क्योंकि बहुत सारे, oh my god, एक और हाँ. तो when you're shooting a horror movie as an actor, mostly what do you have to do? You have to be scared. Correct. How do you be scared? You have to breathe. There has to be lots of that. Now, अगर take per take, आपको वापस deep breathing, heavy breathing, fast breathing करना पड़ता है. You get lightheaded. I felt like I was going to faint so many times and I was like, Arif, I can't do any more heavy breathing. My head is feeling so light. I feel like it's spinning. So all of these random things that I didn't expect were very coming from a person who does yoga so much, I was obviously मतलब इतना breathing करने के बाद भी she goes through that. Actually वो सबसे ज़्यादा frustrating था because बहुत बार मैं कुछ scene में कर रही थी and Arif would be like, अच्छा ना, also the breathing, also not, please, मैं आँखों से पोर्ट्रे कर लूँ कि मैं डर रही हूँ, मुझे heavy breathing नहीं करना है अभी. तो that was actually, so like all these random छोटा things that you go on the technical side, those are what I found challenging. But also physically, like you said, and mentally, because physically क्योंकि horror movie में बहुत बारिश है तो वापस भीगना पड़ता है, for long many days at a time आप सिर्फ बारिश में खड़े हो, scene पर scene बारिश में हो रहा है, तो वो काफ़ी एग्जॉस्टिंग है. सेटअप के टाइम में थोड़ा और टाइम लग जाता है क्योंकि लाइटिंग हैज टू बी अ सर्टेन वे. Even action you've done. Action, हाँ, मैंने action किया अपने लाइफ.
तो उसमें भी मजा आया. And actually there is no matlab, it's not very heavy action, but there are falls and getting hit and all that jazz, but she did not use a double. हाँ. She's done it एक herself. डबल थी सेट पे, लेकिन उससे कुछ नहीं, बिल्कुल वो- नहीं किया, पता नहीं क्यों. मुझे समझ में नहीं आ रहा वो वहाँ थी she was क्यों. just a stand-in. She was not really a double. कॉस्ट्यूम और सब पहनकर जस्ट स्टैंड इन. मुझे कभी मुझे लगता था कि उससे भी कुछ करा लो, but then I was like नहीं, अभी इतना कर लिया तो हम ही कर लेते हैं. Anyway, I think filmmaking is such a mentally and physically exhausting job. I think मुझे लगता है वो 12 घंटे जब हम सेट पे होते हैं, चाहे एक सिंपल सीन भी कर रहे हो, लेकिन जब आप ऐसी फिल्म कर रहे हो तो जिसमें एक्शन है, बारिश है, रनिंग अराउंड है, so much she is also done. It gets really mad. So would you call this आपका most challenging role till date? फिजिकली 1000%. मतलब जितनी एग्जॉस्टेड मैं यूटर्न के सेट पे थी, उतनी एग्जॉस्टेड मैं लाइफ में कभी नहीं हुई हूँ. आई प्रॉमिस यू. मतलब हैंड टू हार्ट, हैंड टू गॉड, आई हैव नेवर बीन मोर टायर्ड देन आई वाज ऑन दिस फिल्म. बिकॉज ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक मैं इस फिल्म की हर सीन में हूँ ऑलमोस्ट. यू नो, बहुत कम सीन्स है जहाँ मैं नहीं हूँ. तो टाइम कमिटमेंट बहुत बड़ा था. सीन्स बहुत सारे थे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, तो उनको यू नो कई एंगल से शूट करना पड़ता था. यू नो, वेदर कंडीशंस, हम चंडीगढ़ में समर में शूट कर रहे थे, तो एक्सट्रीम हीट था. और कभी कभी हम इन द आफ्टरनून सन राइट देयर 40 डिग्रीज हीट फील्स लाइक टेम्परेचर 50 डिग्रीज में हम इन द सन शूट कर रहे हैं. तो और उसके ऊपर फिर रात को रेन. मोस्ट ऑफ आवर फिल्म इज नाइट शूट्स, तो यू नो सो मच ऑफ इट हैपेंड एट नाइट. तो लॉन्ग शिफ्ट्स, यू नो स्लीप का स्केड्यूल पूरा उल्टा सीधा, ऊपर नीचे सब कुछ हो गया. तो इट वाज, एंड यू नो देयर सो मेनी स्टोरीज फ्रॉम इट, बट every single person on that set has put their heart, soul, energy, life into this film for those 45 days or however long we were in Chandigarh. I don't think we thought about anything else, क्योंकि time ही नहीं था to think about anything else. You know, we were living, eating, breathing, sleeping U-turn. So definitely my most exhausting film for sure. And you will, since you have I'm sure you enjoyed doing this, तो आप continue करोगे ऐसे roles और ऐसे. हाँ, लेकिन अभी मैंने 2 thriller already कर लिए, तो अभी not actually back to back, almost प्यार बीच में आ गया था. But हाँ, and like I said, मुझे अलग अलग genres में काम करना है, तो अभी now I'll wait 2 more films, फिर एक और thriller शायद. Nice. प्रियांशु, आपके लिए भी इतना ही difficult था कि आपके लिए थोड़ा easy going था? मैं उतना एक्शन नहीं है जितना अलाया को करना पड़ा था, बट ऑफ कोर्स मैं भी रेन सीक्वेंसेस से बहुत डर लगता हूँ. मुझे ठंडी बहुत लगती है, एंड पीपल आर लाइक अरे तुम तो पहाड़ी हो, तुम्हें क्यों ठंडी लगती है. वो मुझे पता नहीं क्यों बोलते हैं ऐसे लोग, बड़ा रॉन्ग नोशन है वो. मैं सडनली पानी में जाता हूँ, मुझे बहुत ठंडा लगता है. एंड वी हैड रेन सीक्वेंसेस, लॉट्स ऑफ देम. She had to go through really gruesome, location wise also, I think, the kind of action she has done. But नहीं, मुझे मज़ा ज़्यादा आया in the sense of, I think as she's rightly saying, the energy was really nice. So we were not, now when we think about it, it feels tough. But when you're in it, you're enjoying it a lot. So that's why it keeps you going. And because there was such a young crowd, yeah, and the energy was beautiful. And हमारा जो कॉप का यूनिट भी था, जिसमें राजेश शर्मा है, मनोज चड्डा है, श्रीधर भाई हैं, सबके सब वो भी बड़े मज़ेदार थे. तो हमारे वो पुलिस यूनिट बड़ा सही होता था. एंड ऑल ऑफ अस, आई थिंक, अनुभव से लेकर डीओपी, हमारे सबके सब यूनिट, वो एक एनर्जी बड़ी अच्छी लगी थी मुझे, बड़ी. So it was not a tense set, मतलब एकदम serious set नहीं था, मस्ती होती थी. मस्ती के लिए टाइम ज्यादा नहीं था. ऑब्वियसली मैं कह रही हूँ, हम जितने भी घंटे थे दिन में, हमने सिर्फ यूटर्न की शूटिंग की है. That's true. और उसके बाद घर जाकर, आई मीन होटल रूम जाकर, अगले दिन के लाइंस पढ़कर, यूटर्न का मिट्टी और धूल और वो सब जो है वॉश करके, बाय द टाइम वेयर इन बेड, यू सेट योर अलार्म्स, बिफोर यू नो इट यू वोकन अप एंड यू आर गोइंग बैक टू सेट. तो एक्चुअली फिल्म ओवरऑल, यू नो, इट्स वेरी इंटेंस इन थ्रूआउट. तो सेट पे आई डोंट थिंक, बहुत रेयरली कभी ऐसा हो कि किसी एक्टर ने कुछ फंबल कर दिया, कुछ कर, कोई हंस पड़ा हो. आई डोंट रिमेंबर कि मैंने और अलाया ने कभी कोई जोक मारा है, मैंने प्रियांशु ने कभी लाफ्टर सुना हो, बिकॉज इट वाज सो इंट्रिगिंग. Yeah, no, मतलब it was never like we really, you know, like we're joking or we had chill time कि चलो आधा घंटा कुछ नहीं करते हैं. लेकिन ऑनेस्टली जो पूरा प्रोसेस था वो काफी कोलैबोरेटिव था. यू नो, जैसे नॉर्मली एक फिल्म पर एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, co-actors, you know, generally there are big distinctions between everything कि you know everyone plays a certain role on a set. I feel like हमारे set पे
सब बहुत collaborative और involved थे in every aspect of it. I don't think I think everyone just put heart and soul into it. But I want to know from you, were they your first choice? Who did you approach first? So honestly, Alaya was already on board, and I was very excited to work with her. One of the reasons why I jumped in and I said, "Wow, this is going to be great." After that is when the casting director Vaibhav, who came on board, and he helped me out in getting all the other actors. So then Priyanshu came on board, Ashim came on board, Rajesh Sharma, Manu Rishi Chadda, Sridhar Dubey, all these guys came on board. The best part was that I should say, touch wood, all my actors, even if they are there for one scene, they're all good actors. Yeah. I didn't have a problem with any actor where I was like, "Arey yaar, he's not able to do it," or "He's eating into time." Absolutely not. So I should say that I'm blessed and thankful to my casting director and my producers that they gave me even the smallest part, who's playing a small character also in the film, is a good actor. So that way I was really blessed. Alaya, in the last few years, you have done amazing work. And you have got good projects also. And going forward also, you have a very, very big project. बड़े मियाँ छोटे मियाँ. हाँ सच में इसका तो नाम हुआ नहीं. Am I doing that film? मुझे पता है हो रहा है. तो can you say something? Can you talk about it? Anything? मैं announcement के पहले तो nothing is पता. No, I don't know. Okay, what is your next project? चलो let's next project like Shri. Shri is coming out September में with the lovely Rajkumar Rao. Yeah. So talented, so incredible. I've learned so much on that set. Just like. But again, he's a very reserved kind of a person. But कैसा था उनके साथ? Reserved as in he's a thoughtful person. Reserved is the wrong word. He's very friendly, very committed. जो भी character का requirement है, he's like all in, एक second के लिए भी ऐसा नहीं लगता है कि he's not the character or he's gone in and out of it. He's a very giving co-actor also. So, अगर scene में it's on me, he'll perform with just as much intensity, so I get that same feeling back. He is, if you ask him for advice, he will really give you very thoughtful advice. It's not just for the sake of it. And you can see how passionate he is about his work by the amount he just gets into, the films that he does. He's just incredible. I mean, it's something else. You don't recognize him as him when he's on set. Then after that, when you see him not on set, you're like, oh, hey, it's just incredible. I think that's a very, very special film as well. That's next. उसके बाद जो भी है हम अगले इंटरव्यू में बात करेंगे. What about you, Priyanshu? There's a lot. पिछले 2 साल से बस thankfully touch wood सिर्फ shooting ही चल रही है post lockdown, and now all of them are lined up. The release, whether it is Pipa or which is the main one which is going to come out, me, Ishan and Mrinal. Currently shooting with Vishal Bhardwaj for a very big series that should come out also this year. Of course, everybody's waiting for Mirzapur 3. Yeah. वो आएगा. Then there's what 2 about more. Extraction? You're part of Extraction. No. Extraction में मेरे को गोली लग गई थी. Oh yeah. So a lot of people keep asking me. I said very clearly. In fact, in the previous interview also we said कि मेरे को रणदीप को और हम सबको गोलियां लगी थी. सिर्फ एक ही सुपर हीरो है जो गोली लग के वापस आ सकता है. वो क्रिस है जो who's back. Yeah. So Extraction 2 is a very different story altogether. All right. Well, on that note, thank you so much हमसे बात करने के लिए, and all the very best for Newton. Really looking forward to this because again, like I said, it's one of my favorite genre, thriller and suspense. Great. You will enjoy it for sure. You will. Yeah, please do watch it. I guarantee. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you. Thank you so much.